Hi everyone, so this is day 20 of the Abhyaas session. Okay, now everyone knows what exactly is the Abhyaas session, but for the new students, just to be in a brief. Now what we do is we take the articles from the 5 different newspaper every week and we frame the prelims questions from there. Okay, so you know very well how to frame the mains notebook from the newspaper, but we teach you exactly how the prelims question can be framed from any article. Now this is very unique approach and very important for all the students who are struggling with the prelims examination. Okay, now coming back to the very first article, this article is from the Hindustan Times and it talks about the GVA, gross value added of the different sectors. Now if you see here, the very first question we asked here about the agriculture share of the gross value added, then the manufacturing and the services. So in this article, if you see here, we have divided this article to 3 phase, and 3 phase say here, the 3 phase here is 1965 to 2008 pre-reform, then 1991, then from 1991 we have 2008, and from 2008 we have 2024 2025. So this is basically a global financial crisis. 2008 is a global financial crisis. Okay, then we have the post global financial crisis and then we have the pre-reform. Right now in तीनों phase में अगर आप देखोगे, see this image, the agriculture sector, if you see here, it's kind of declining here. Okay, for the manufacturing, if you see, it's a kind of stable here, and for the services it's a very increasing phase. So in the examination, if you get any question regarding any kind of sector, you should be in a position to answer. Okay, you must answer, because ये बिल्कुल टिपिकली यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा कि एग्रीकल्चर का जो एडिशन है जीवीए में वो डिक्लाइन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा हुआ है, सर्विसेज कैसा है, एंड इंडस्ट्री भी आप देख सकते हो. ओके, नाउ दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट. नाउ वी हैव द सेकेंड आर्टिकल वी सॉ हियर इज रिगार्डिंग द पावर CO2 एमिशंस. और आपने देखा एक यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, यू सी हियर द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5. Then we have the in terms of the CO2 emission from the fuel combustion, the Indian ranks second in the Asia Pacific, and the electricity are the largest sources of the CO2 emissions in India. है ना. अब इस आर्टिकल में आपसे ये पूछा गया है कि CO2 emissions is largest where? India, China. So you see this image here, we have the China, the largest CO2 emitter, then we have the US, and then we have India. So yes, China is at number 1, and then we have the India's CO2 emission larger than US. No, US is the second largest, and then we have the India. Right now, India's CO2 emission is more than 10 GT. It's incorrect, because if you see here, it's around 2.9 GT. है ना. तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे था ना, एंड आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो इनकरेक्ट हो गया था. अगर आप इस क्वेश्चन को कर देखें कि ये अभी नहीं आया है, तो हम वैसे भी इसको सॉल्व करते. राइट, सो दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रिसिटी. यस, अगेन आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा. ये जो सेम स्टेटमेंट है, ये आपको इस आर्टिकल में मिलेगा एज इट इज. ओके, यू विल गेट दिस पावर सेक्टर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द इंडियाज. आप देखो यहाँ पे, ओके, द पावर सेक्टर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द इंडियाज टोटल एमिशंस. तो क्वेश्चंस जो रैंडम एग्जामिनेशन में आप देख रहे हो ना, ये आर्टिकल से आ रहे हैं और आपको मैगजीन में मिल नहीं रहे हैं. आपको लग रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं. सोर्स ढूंढो, और सोर्स इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. इट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम whomsoever the mentor and the coaching center you are picking. Right now, if you see the next article, it talks about the WHO essential medicine list. Very important, because the latest WHO revision September 25 है ना. अब आप देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या है. The listing of a medicine in the EML essential medicine list means what? Lower cost, better affordability, and greater access. True or false? This statement is true. The WHO list, this medicine list are updated every 2 years. Yes, it is updated every 2 years. Now, in the same pattern, we have the national list also, where every country is implementing that. Similarly, India has implemented the national list of essential medicine. Now, it says here, the third question, that WHO provides a binding framework. It's incorrect. It doesn't, because every country has their own criteria, right? Now, the last question says, who prepares for India?
The answer is Ministry of Health and Family Welfare. Similarly, we have questions on the inflation targeting. Then we have the question on the WTO deal on the overshare. Now, if you see this question, why this is important? Because WTO agreement on the fishery subsidies, this has recently came into effect. After this 4 country has signed. So the question here was that India has still not signed the agreement. Yeah, you see here, has India signed the agreement? No. Has the agreement come into? तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम के लिए. वैसे आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग का क्वेश्चन देखोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन इज अ प्राइमरी मेट्रिक फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. नो, ये सीपीआई क्या है? कंबाइंड है या ऑल है या एक दो है? सो आंसर इज 1. यू विल गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग ऑल 3. तो ये बेसिक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना. सिमिलरली इफ यू सी इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय द, तो बेसिकली व्हाट आई रियली वांट टू से हियर दैट फ्रॉम द आर्टिकल questions are being framed and this is the original current affairs that you need to learn, है ना. ऐसे ही और भी आर्टिकल्स हैं. टुडे वी हैव द मोर आर्टिकल्स, वी कांट डिस्कस टुडे, बट येस वी हैव दिस आर्टिकल्स एवरी वीक. In the same way, we also give you the every week assignments in the same pattern, and then this is called your perfect preparation for your prelims examination. Thank you so much. Keep working hard, and if you are really struggling, join the course as soon as possible and start. Okay.